discuss about the conductivity of semiconducting material. Okay, so we will just discuss about some theoretical point. We know the metals are generally segregated into the three parts. एक होता है conductor, semiconductor and insulator. In today's session, we are trying to determine the mathematical expression of semiconducting material. Right? We are trying to determine the mathematical expression of semiconducting material. Right? Then, first of all, we try to determine the conductivity of conductor. See, the conductivity of conductor. First point लिखेंगे. The conductivity of conductivity of conductor is only due to the free electron, right? It's only due to the free electron. कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो सिर्फ इस वजह से होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है. बट इन ए केस ऑफ द सेमीकंडक्टर के केस में क्या हो जाएगा? इन ए केस ऑफ द सेमीकंडक्टर the conductivity happens due to electron as well as holes. मतलब सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड होल्स हैं, राइट? ये दोनों की वजह से सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी होगा और कंडक्टर का सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा. यहाँ तक डन. नाउ अकॉर्डिंग टू द free electron theory, the conductivity of conductor sigma, conductivity is indicated by the sigma, and the conductivity sigma of the conductor can be given as one expression. I will show the expression. मतलब the conductivity sigma of conductor is given as sigma is equals to n e mu e. See, एक नोटेशंस को टारगेट करेंगे. sigma कंडक्टिविटी इंडिकेट हो रहा है सिग्मा से, and the conductivity of conductor is given as n e mu e. Now see, what is n? Where n is number of electrons per unit volume. बराबर? इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. E, what is E? E is a charge on electron, right? And mu e is a electron mobility, और इसको कहते हैं mobility of electron. Right? So this is the three notation. That is the sigma is equal to n e mu e, and n is the electron density and number of electron per volume. E is a charge on electron, and mu e is a electron mobility. Then what is a mobility? Boss, mobility means how quick electron is available for conduction, right? It's called as a mobility. So this is the equation number 1, and this is equation for conductivity sigma for conductor, for the conducting material. Now our target is to determine the conductivity of semiconducting material, right? According to the free electron theory, the conductivity of semiconductor can be given as, we will discuss some notations firstly, then we will try to determine the conductivity. See, what is n? n क्या है? Number of electrons per unit volume.
also called as a electron density, right? H is a number of holes per unit volume, right? Okay. N is a number of electron per unit volume. H is a number of holes per unit volume. Okay. Mu E, electron mobility. Mu H, holes mobility. And sigma N, conductivity of conductivity due to electron, and sigma H is conductivity due to holes. बराबर, ये 4 पॉइंट में ध्यान रखने हैं इसको सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी डिटरमाइन करने के लिए. Now according to these 6 points, we will try to determine the conductivity of semiconducting material. Obviously, we know the conductivity of semiconductor is due to the electron and hole also, right? First of all, we will try to determine the conductivity due to the electron, right? Then conductivity due to electron. Conductivity due to the electron. That is sigma E is equals to, how we can define the sigma E? Sigma E is equals to N E mu E. That will be your equation number 2. Where N is a number of electrons per unit volume. E क्या है? E is a charge and mu E is a mobility of electron. ठीक है? Electron mobility. ये क्या हो जाएगा? This is the conductivity due to electron. Now conductivity due to holes. Conductivity due to holes. Because in semiconductor हमें पता है कि conductivity इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होती है और होल की वजह से होती है. हमने क्या क्या पहले conductivity डिटरमाइन किया due to the electron. Now we are determining the conductivity due to the holes. बराबर? Then conductivity due to the holes is given as sigma H is equals to H E mu H, right? We consider this equation number 3. In this case क्या हो जाएगा? H is a number of holes, right? E is a charge and mu H is a hole mobility. Now we have these 3 equations, right? Now obviously we know that the conductivity of semiconductor will be the addition of conductivity to the electron and conductivity due to the holes, right? So we will do the same. Now observe this side, ठीक है? Now obviously we know the conductivity of semiconductor is the sum of conductivity due to the electron and conductivity due to the holes, right? So we will write here conductivity of semiconductor. Sigma is equals to sigma E plus sigma H, right? We will consider the equation number 4. Now by putting the equation number 2 and 3, we will get sigma is equals to क्या हो जाएगा? N E
mu e plus h e mu h. Now we will take e will be common. So sigma is equal to क्या हो जाएगा? E in bracket n mu e plus h mu h. And this is the equation number 5. And equation number 5 gives conductivity of semiconductor. And equation 5 gives the conductivity of semiconductor. Boss, now we have to discuss the three conditions again. देखो, ये हो गया. This is the conductivity of semiconductor. We know that semiconductor have two types, एक intrinsic semiconductor और an extrinsic semiconductor. In the case of the intrinsic semiconductor, there is n type and p type. अगर आपका कंडक्टर सिर्फ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो उसका एक्सप्रेशन कुछ अलग रहेगा. अगर आपका कंडक्टर n टाइप है तो उसका एक्सप्रेशन कुछ अलग रहेगा. और आपका सिर्फ p टाइप है तो उसका कंडक्टर भी कुछ अलग रहेगा. Now we will try to determine the three conditions: conductivity due to the intrinsic semiconductor, conductivity due to the n-type semiconductor, conductivity due to the p-type semiconductor. Okay? Now see, this is the final equation for conductivity of semiconductor material. This is means the conductivity due to the electron and conductivity due to the holes. This is the final expression for semiconducting material. Now again we have three processes as we discussed previously. First condition है, this is a condition 1. Condition 1. Conductivity of intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. Conductivity of intrinsic semiconductor. Conductivity of intrinsic semiconductor. Now see, in a case of intrinsic semiconductor, obviously we know that in a case of intrinsic semiconductor, number of electron is equals to number of holes, right? Number of electron is equals to क्या होता है? Number of holes होते हैं, right? Then the equation for intrinsic semiconductor can be given as, that is number of, we can write this is n is equals to h is equals to ni. Consider करेंगे where ni क्या है? Ni is a intrinsic concentration. Intrinsic concentration. Done. Then the equation 5 can be given as equation 5 for intrinsic semiconductor क्या लिख सकते हैं लोग? We can write sigma is equals to देखो क्या जाएगा? NIE mu e plus NIE mu h, right? Now NIE will become common because of n is indicated by Ni और h also Ni से indicate हो जाएगा intrinsic semiconductor केस में. तो क्या हो जाएगा? sigma is equals to NIE ब्रैकेट में mu e plus mu h, and this is the expression for is equal to conductor 6 कहेंगे, and this is the expression for conductivity of intrinsic semiconductor. What? Intrinsic का conductivity इस equation से आपको मिलेगा. Why? Because of number of electrons and number of holes are same. जो दोनों indicate किया जा रहा है Ni से, intrinsic concentration, right? इसलिए हमने क्या किया? N की जगह पे हमने Ni पुट किया और H की जगह पे भी हमने Ni पुट किया और इक्वेशन मिला हमें NIE mu e plus mu h. This equation gives the conductivity of intrinsic semiconductor, right? Now second condition.
Now second condition. Condition 2. Condition 2 क्या है? Conductivity of n-type semiconductor. n-type का n-type semiconductor. n-type semiconductor. Now see, in case of n-type semiconductor, number of electron is greater than number of holes. Means we can write n e mu e is greater than h e mu h, right? Then equation 5, मतलब that is the equation sigma is equals to e bracket n mu e plus h mu h is given as, ये इक्वेशन क्या आ जाएगा अपना? ये इक्वेशन आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू n e mu e ओनली, राइट? इक्वेशन नंबर 7 ये आपका हो जाएगा कंडक्टिविटी ड्यू टू द n-type semiconductor. नाउ थर्ड कंडीशन. Now third condition, that is condition 3 for conductivity of p-type semiconductor. Also, what happens in p-type semiconductor? We know in the case of p-type semiconductor, the number of electron is less than number of holes. ये condition satisfied हो जाएगी, right? Means we can write n e mu e, conductivity of electron due to electron is less than h e mu h, conductivity due to the holes. बराबर? Then equation conductivity sigma is equals to n mu e plus h mu h is given as sigma is equals to sigma is equals to h e mu h. Equation number 8. देखो equation 8 gives the conductivity of p-type semiconductor. p-type semiconductor की इस equation से मिलेगी, ठीक है? ये पूरा कंसेप्ट था कंडक्टिविटी का. Now we are going to discuss one problem on the same process, right? एक equation के ऊपर. तो write down the problem. Calculate the conductivity of pure silicon crystal at a room temperature whose concentration of carrier is 1.6 into 10 की power 10 per centimeter cube. Take mobility of electron is 1500 centimeter square per volt second and the mobility of holes is 500 centimeter square per volt second at a room temperature. So now we will come to the problem. In our case, we have the given three phenomena. एक दिया है आपको, पहला पॉइंट दिया है. We will write the given data. चलो ठीक है. Before that, we have to understand in problem. They said silicon, pure silicon का है. Obviously, if they are mentioned that pure silicon, तो boss silicon is intrinsic semiconductor.
नंबर ऑफ होल्स शुड बी द सेम, मतलब उनका इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन विल बी द सेम, राइट? तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है आपका n is equals to h is equals to ni वाला कंडीशन हमें यूज करना है इस प्रॉब्लम में बेटा। आगे जाते देखते हैं। देखो हमें एक पॉइंट दिया है, फर्स्ट पॉइंट हमें दिया है mu e is 1500 बराबर 1500 नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। mu h दिया है आपको 500 एंड आपके पास दिया है E क्या है आपका 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम और आपका Ni दिया है 1.6 into 10 की पावर 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इतना दिया है। और अपने पास प्योर सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो ऑब्वियसली वी विल ट्राई टू पुट इक्वेशन sigma is equals to nie mu e plus mu h, because this is the expression for intrinsic semiconductor और हमें मतलब प्रॉब्लम में प्योर सिलिकॉन का है, तो प्योर सिलिकॉन इज अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो उसमें नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, इसलिए हम लोग हमने क्या किया इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन यूज किया और एक्सप्रेशन था, इक्वेशन पर देख लेना है, ठीक है। नाउ देखो क्या करेंगे, वी हैव इन दिस केस n i हमारे पास है 1.66 into 10 की पावर 10, e है अपना 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम और ये क्या है उसके कंसंट्रेशन से, मतलब मोबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटीज ऑफ होल। क्या करेंगे ni मतलब 1.6 into 10 की पावर 10 की पावर 10 into E है 1.6 into 10 की पावर -19 ब्रैकेट में mu E है 1500 प्लस ये है 500, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 into 10 की पावर 10 into 1.6 into 10 की पावर -19 into 2000, ठीक है। और 2000 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 10 की पावर 3, राइट। तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे पहले, फिर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे 2 into 10 की पावर 3। अब क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड एक साइड में लेंगे और पावर क्या करेंगे, पावर एक साइड में लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1.6 into 1.6 into 2 into 10 की पावर 10 into 10 की पावर -19 into 10 की पावर -3, सॉरी 10 की पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर ये हो जाएगा -19 मतलब -9 और +3 -6, तो क्या हो जाएगा into 10 की पावर -6 और 1.6 into 1.6 into 2 ये हो जाएगा 5.12, बस आपका आंसर आएगा 5.12 into 10 की पावर -6 मो सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। डन, थैंक यू।